Hello kids, how are you doing all? In my last video, I have done the explanation of the chapter Wonderful Waste. Today, we will do the question answers as well as the exercises of this chapter. तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Now let's begin with the question answers. Answer the following questions. Question number 1. What were the preparations in the palace for? The preparations in the palace were for the grand feast. Question number 2. Why did the Maharaja go into the kitchen in the afternoon? The Maharaja went into the kitchen in the afternoon to make a survey of the dishes being prepared for the dinner. Now next question, question number 3. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? The cook had planned to throw away the vegetable scraps. Now we'll do question number 4. Ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of AVL in the box below. So what are ingredients? Ingredients क्या होते हैं? Ingredients are the things that are used to make a dish. तो AVL जो डिश प्रिपेयर की गई थी उसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए थे वो इस बॉक्स में दिए हैं एंड वी हैव टू सर्कल देम. तो चिलीज या इट वाज देयर इन द प्रिपरेशन, कोकोनट वाज देयर, गार्लिक भी था, ग्राउंडनट वाज नॉट देयर, रोस्टेड पीनट्स नहीं थे, ब्रोकन बैंगल इज नॉट एन इंग्रेडिएंट, वुड भी इंग्रेडिएंट नहीं है, कर्ड दही कर्ड या इट वाज यूज्ड देयर, basket is not an ingredient, vegetable scraps, yes, the entire dish was made using the vegetable scraps. curry leaves भी थे because curry leaves से उन्होंने decorate किया था end में. pot is not an ingredient. Now let's move on to the next question, that is question number 5. State whether the following are true or false. हमें बताना है कौन सा true है and कौन सा false है. The king had ordered a dinner in the palace. We have already read the chapter. और अपन ने पढ़ा था कि किंग ने ग्रैंड फीस्ट ऑर्डर की थी जिसमें उन्होंने डिनर भी ऑर्डर किया था अपने पैलेस में. एंड इट इज़ ट्रू. नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड एवियल बिफोर. येस इट्स ट्रू क्योंकि एवियल इट वॉज एन स्पॉन्टेनियस डिश प्रिपेयर्ड बाय द कुक यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. The cook had planned to make another dish using the vegetable scraps. False. The cook was in a fix what to do with the vegetable scraps and he was about to throw them. Okay. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ingredients क्या होते हैं. Now we'll read about the recipe. What is a recipe? A recipe is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing avial. Number them in the correct order. Recipe is a direction which is used to prepare a certain dish. Here are some sentences are given which are not in the correct order and we have to put them in correct order. Now, the first one is already done for you. Wash and clean the mix of vegetable bits. ठीक है, पहले उन्होंने wash और clean किया. Then what the cook has done? He has cut the vegetable scraps into long strips. This is number 2. Then he grind some coconut, green chilies and garlic. फिर next क्या किया? He then whips some curd and mix it in. फिर pour some coconut oil on top. फिर then decorate with curry leaves. And at last what he did, avial is ready. So the number sequential order क्या रहेगा हमारा? 3 2 1 6 4 5 7. Now let's move on to the next question. Question number 2. Given in the box are some things that children do after they reach home from school. Choose 5 things that you do when you reach home from school. Write them in order. इस बॉक्स में there are few sentences or few words or few things are given कि
बच्चे स्कूल से जब घर पहुंचते हैं तो what they do? We have to choose some of them from this box and then write it in a correct order. First, what the children do first? First, they put away school bag. Then I change out of school uniform. Next, I wash up. After that, I have lunch. Finally, I do the homework. Now, let's move on to the next question. The Maharaja was a wise man and ordered the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away. Name some of the things which are thrown away at home or in school. ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम घर पे वेस्ट कर देते हैं. योर मदर यूज टू कुक इन किचन. वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डस्टबिन में डाल देती हैं. आपके स्कूल में भी आप ऐसा करते हो कि बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट हो जाती हैं वो आप डस्टबिन में डाल देते हो विदाउट थिंकिंग कि वो चीज़ें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे हम कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं. तो व्हाट आर सच थिंग्स? आई हैव रिटन फ्यू थिंग्स. I hope it is visible to you all. Yes. Then name the things which are thrown away at home or in school. Answer is scraps of paper, cardboard boxes, vegetables and fruit peels, leaves, twigs, old and used pens, leftover food, etc. are thrown away at home or in school. Question number B. Sit in a group of four and think of interesting ways in which they can be made useful. Okay, the things which we have mentioned above, we have to make something, how it can be converted into a useful thing. The scraps of paper, cardboard boxes and old pens can be recycled and reused. We can make decorative items using the above waste and even compost could be made using the kitchen waste. Kitchen waste से हम खाद बना सकते हैं. Okay. Now we will move on to the next question. Look up the following words in the dictionary. They may have more than one meaning. List these meanings. Here are a few words given. Okay, we have to write their meanings. Ground. Ground, an area which is used for a particular purpose or surface of the earth. एक मीनिंग तो उसका क्या हो गया? एक ऐसा एरिया which is used for a particular purpose, surface of the earth. And the other meaning is past tense of a grind. Grind का मतलब क्या होता है? Crush into grains or powder. किसी चीज़ को मिक्स कर देना, किसी चीज़ को ग्राइंड करना. Okay. Next word is survey. Survey. One meaning is detailed investigation and the other meaning is look carefully. Scrap. Scrap का एक meaning क्या होता है? Waste material और fragments, छोटे छोटे pieces. Fragment, छोटे pieces. And other meaning क्या है? Get rid of something or cancel it. Now number 4. 4 is sternly. Sternly means strictly or severely. Next word is tempting. Tempting का meaning क्या होता है? Alluring or inducing. Now we'll move on to the next question. Make new words by adding or dropping a few letters from the root word. Some are done for you. तो root words हमें दिए हुए हैं, उनमें से हमें कुछ किसी में ed ऐड करना है, किसी में ing, किसी में er और किसी में est. Now the first word is pound. 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 We can write pounded and pounding. But pounder is no word. Poundist भी कोई word नहीं होता. Large. Large में हम ed नहीं लगा सकते, ing नहीं लगा सकते. Larger and largest, they are the degrees. ठीक है? Larger and largest. कौन कौन सी डिग्री होते हैं? Comparative and superlative. Now the next word is new.
न्यूड कोई वर्ड नहीं है, इस न्यूइंग आईएनजी नहीं आएगा, हम लगाएंगे न्यू ईयर, न्यूअर एंड न्यूएस्ट। टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर एंड टेस्टीएस्ट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स पे ईडी भी लग सकता है, आईएनजी भी लग सकता है, ईआर भी लग सकता है और ईएसटी भी लग सकता है। वाइज, वाइज्ड वर्ड नहीं होता, वाइजिंग नहीं होता, वाइजर होता है और वाइजेस्ट होता है। स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयरिंग, वी विल नॉट यूज स्टेयरर नहीं हो सकता, स्टेयरिस्ट नहीं हो सकता। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग, क्लीनर एंड क्लीनेस्ट। Do any of these words use all of four endings? Yes. कौन कौन से वर्ड में फोर एंडिंग हुए हैं? एक तो टेस्टी में हुआ है और दूसरा क्लीन में हुआ है। ये सारे इसमें हम सब में ईडी, आईएनजी, आईईआर, ईएसटी सब लगा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर चैप्टर. इट इज नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम. अब ये क्वेश्चन तो सब बच्चों के लिए अलग अलग होगा. ओके, यू कैन डू इट ऑन योर ओन. जो मैंने किया है, आई हैव रिटन फ्यू आंसर्स हियर, नोट इट डाउन. ओके, फॉर अ फीस्ट एंड फेस्टिवल, व्हाट इज द डिश विच वी मेक ऑन अ स्पेशल फीस्ट? खीर. ओके, कुछ खीर भी बनाते हैं, कुछ सेवैयाँ बनाते हैं, और भी बहुत सारी डिशेस हैं. ओके, व्हेन यू आर अनवेल, जब अनवेल होते तो कौन सी डिश बनती है? पॉरेज. एवरी डे कड़ी एंड राइस. ओके, avial is a dish made in Kerala. Do you have a similar dish in your state made from a mix of many vegetables? What is it called? Yes, vegetable soup. Note down the ingredients used to make it. What ingredients we use in making vegetable soup? Lots and lots of veggies, salt, pepper, butter, garlic and coriander. Now write down the recipe. Now I am giving the recipe of the vegetable soup. First, we will note down the ingredients. Ingredients are vegetables like potatoes, tomatoes, corn, spinach, broccoli, peas, onions, butter, salt, pepper, and some sauces. Now, recipe is add all the vegetables, salt, pepper, butter all together in a pot. Add 2 to 3 glasses of water. Give it a nice boil for 10 to 15 minutes. Then add sauces and some coriander for garnishing. Now the soup is ready to serve. Okay, this is the end of the chapter. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. Till then, bye.